हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है रेको गेम्स में। आज हम फिर से खेलने हैं रॉकेट एडिशन। तो लास्ट टाइम मैंने मिस्टर फ्यूजी को हरा दिया था। हमें पता चला था मिस्टर फ्यूजी एक ट्रेटर है, आई थिंक गद्दार निकले थे कांटो के। और यहाँ पे एक ओक आया था इनसे अपने फ्यूजी को मिलने के लिए। तो ये लोग हो क्या रहा है, मिस्टर अपना सॉरी म्यूटू का एक प्रोजेक्ट था जो ये लोग बना रहे थे, और गलती से उसने कुछ और बना लिया था। अब वो चीज़ क्या थी और क्या हुआ था पास्ट में 11 ईयर्स अगो, सच में यार वो सब जानने में मज़ा तो आने ही वाला है। और आज हम अपने हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं। आई थिंक आज अपना प्रमोशन हो सकता है, बिकॉज हमने बहुत बढ़िया काम किया यार। हाँ, एक दो बार हम आ चुके थे, बट तभी काम तो अपना बढ़िया ही हुआ है। और आई थिंक अब अपन काबिल है खुद को एडमिन कहने के। तो देखते कि अपना प्रमोशन होता है या नहीं होता। तो अभी के लिए तो हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा अपन को। वेल चलते हैं यार, अपना सूजी कब काम आने वाला है। तो यहाँ तो पहुँच गए, अब जल्दी से जाते हैं यार। अपन को क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? ओ रेड, व्हाट, क्या हुआ? अच्छा याद है क्या? हम आई थिंक रेड अभी आई थिंक हेडक्वार्टर्स को तबाह कर लिया था ना। तो यार प्रॉब्लम हुई है यार। अपन तो एडमिन बनने वाला था, अभी यही होना था यार। तो मुश्किल से यार, क्या है यार। Jesus Christ, I never been so thoroughly sheltered in a Pokemon battle in my life. That key, I never seen anything like that. Ronnie? Dude, I don't even know how to tell you what just went down here. He knocked us out, all of us. Yeah, dude, even boss, hell, even me. That little kid from Mount Moon. Like, I totally want to tell you it was close match, but not even close. That kid is a Superman man. सच में यार, रियली दैट इज़ समथिंग। आई मीन इसने सबको हरा दिया। वेल ये बात अलग है कि अपन अगर मैं रेत की तरह खेलता तो मैं हरा देता। वेल व्हाट आई कैन से, देखो ही बीट मी, ही बीट ऑल ऑफ अस। यू गोइंग टू सी बॉस? हाँ बी वॉन्ट ही इन बीट ऑफ फ्रिंजी राइट नाउ। वेल वो बात तो तेरी सही है, अभी गुस्से में तो होगा बॉस। वेल सबको जो इसने हरा दिया है, तो चलते हैं यार, क्या होता है देखना पड़ेगा। वेल कुछ खतरनाक ना हो तो अच्छा है। एरिया, इट्स पॉजिटिवली द worst humiliation we ever have been through. If Lance and Elite Four had stormed in here and bust us out, I would have been furious. But if some pretty small time gang decided to marshal all its resources for successful strike against us, I would taken it as a slight upon my honor. But these are what a devil could have prepared me for this. A child, I mean, what is Arceus name make of this? That most prestigious notorious organization in all of Kanto brought to its knees at hands of some fraudulent trim I think क्या बोला पता नहीं, but चल छोड़ा। I am disgusted, revolted, ashamed at our incompetence. I've been Navy, understand me, the kid, and look at him now. 4 badges, fully evolved Pokemon in his Astran. Who knows, before we know it, he earned the right to challenge Viridian Gym, and we demand that its leader swap and accept his challenge. No, let's not get ahead of ourselves, but if it happens, we will have to be ready, Arya. You know, I'm always prepared for every eventually Giovanni. There are those of us who you can count on stand by your side until the end and beyond if you need it. Which props, it would seem if your favorite little grunt has graced us with his presence. Reiko, so you are returned. I'll be frank and tell you that Fuji antics are the least of my concern at the moment, but let's hear whatever you have to report anyway. Quickly, you hear? Okay. What that's? There's more. Oh, oh, could it be? Well, fine, you piqued my interest. Take it from the start if you would. Okay, तो सारा का सारा कह दिया अपने. A Peloton native then, and licensed for Pokemon trainer by his chief director himself. Well, that's explain how the kid got hold of that freak of Charizard at least.
अच्छा, बराबर चलते रहता. So Oak is looking for Fuji, is he? Good. What is he planning? Does he know about us? This could be bad. This could be very bad indeed. Hmm. सच बोला तूने. I think it's about time you learn the truth. Okay. Very nice, beta. The thing that happened in secret in the final year of the war, and no one thought tell it all the American, but I believe you have proven yourself worthy of hearing it. And if you're going to work with me, the set things straight, it's best you had it clean for me. Okay, I'm going to tell you everything. It was 11 years ago. Canto war effort was going badly. It was clear that we could not win by force alone. Hmm. But we had something that Lance and his boys did not. Something we knew was the key to the victory. और वो क्या था? The minds of brightest scientists in the nation. अच्छा, scientists. Ever since the start of war, Oak had been leading a number of secret initiatives to capture and harness the power of one Pokemon. और यहाँ पे सब गाड़ियाँ क्यों आ रही है यार? मस्त ट्रूथ पता चल रहा है यार. तो once so race most laymen thought it just a legend. सच में. तो हो क्या रहा है यार? आई थिंक ये म्यूटू के बारे में बात कर रहे हैं. बट लेजेंड डोंट विन वॉर्स और न्यू बेटर. तो अच्छा, म्यू को पकड़ना चाहते थे ये लोग, बट म्यू नहीं मिला, इसलिए इस लोग ने म्यूटू का प्लान किया था तब. तो अब पता चल रहा है. तो वॉर जीतने के लिए once a word got back that Dr. Fuji had at least caught hold of Mew, we knew there was no chance that public could know. Alright then, तो फिर आगे क्या हुआ? It was be a region-based kept secret and our only chance of winning. But Mew could not be branded like electric to one battlefield the way Lance did his Jodo, and nor did or expect it could. अच्छा, म्यू को पकड़ लिया था. By the far the strongest Pokemon in the existence, but contained in the body of the most benevolent and soft-hearted capture you could ever see. सच है ये तो. We couldn't make the thing knock out the magic calf for sport, let alone revenge a crowd of my enemy monster in the field. एक सेकेंड यार, पैर दुखने लगे मेरे तो. ओके चलो, अगर कुछ आवाज़ आ रही हो उथल मुथल की तो माफ़ करना. तो सच में यार, कौन ये गाड़ी लेके आते हैं ऐसी? चलो उन लोग को छोड़ो, यहाँ से हम अपने शुरू करते फिर से. सो Oak decided on another solution. To harness Mew power, they would create from it a genetic clone, conditioned from birth to be devoid of empathy and possessed to innate urge for battle. अच्छा, तो इसीलिए इसको they call it the Mewtwo project. At time I was the richest man in the country and devoted member of Oak Elite Four. अच्छा, तो तू Elite Four था. I wanted to do everything I could for Kanto, so I founded the project. Okay. तो इसलिए ये साथ का था. तो an impressive team was assembled. Blaine, Fuji, Bill and Professor Shigeki, Kanto authority on the genetic engineering. So each member was a genius in his own right and wasn't afraid to work day and night for months for a chance to save Kanto. But the project proved much more difficult than expected. अच्छा, तो इन लोगों ने गलती से डिट्टो बना दिए थे. Well, most tests comes out as a formless, half-dead pieces of flesh that did not resemble Mew in any way. तो गलती से डिट्टो बना लिए तुम लोग ने. One of these early failures was practically nasty. Oh, true, equally as erratic and disgustingly shapeless as the others, this newborn monster has inherited Mew's strength. Oh, मतलब ताकतवर था बहुत ही. मुझे सबसे पहला आई थिंक फेलर था. And it broke free from its test tube and escaped the lab, killing several of the earliest specimens in the street. अच्छा, तो मतलब ये बहुत ताकतवर था ये पोकेमोन जो कि अभी निकल गया है.
तो इसको कैस्टोफ्रॉन लोग ने कहते थे। अच्छा, तो मतलब वो पोकेमॉन अभी बाहर ऐसे ही घूम रहा है। मतलब ये पोकेमॉन असली एनिमे में तो नहीं है और ना ही रियल लाइफ में, बट इस गेम में वो है। एंड स्कैर्ड द साइंटिस्ट एज वेल एज डिड मी। क्योंकि अगर वो पोकेमॉन खुले में गया तो प्रॉब्लम हो सकती है इन लोग के लिए। आई बिगिन टू लेस फॉर इन माई इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक ओक वॉज स्टार्टिंग टू फील द सेम वे। Well, luckily, however, Dr. Fuzzy soon gave new hope to project. क्या दिया था मैंने? Fuji suggests a way to contain mu power within a solid sentient body. Sentient body. By creating a clone that would combine mu DNA with that of human. अच्छा. Intel test proves promising and scientists agreed to each contribute to sample of their own DNA to be used for mu clone. ओके, तो डीएनए से काम किया तुम लोग ने। Oak was only one who refused to provide DNA sample. His capture for project had by now risen to peak. Ironically, however, Fuji theory proved correct. Sooner than anyone could anticipate, the team had produced yet definite Mewtwo, a human-like, immensely powerful psychic Pokemon, possessing the requesting cold-blooded, sustained mind and Spanish intelligence. Before anyone could prepare it for the field, however, the Mewtwo project reached its natural conclusion. Devoid to empty but disturbingly intelligent, the new clone could find no reason to fight for Kanto Kyuji. Why the word did not appeal to Mewtwo we couldn't quite say, but it refused to be used as a military weapon. But when we instated its rebelled. सच में हुआ तो बहुत बुरा यार इन लोग के साथ. With psychic power we had no means to control Mewtwo, ruined the life and expect the scientists who had given him life. Really? Try the we believe by desire to find worthy Pokemon opponents, it sought refuge in the depths of notorious dangerous cave outside Cerulean City. अच्छा, तो इसलिए वो इस केव में अभी. As far as I know, there were still hides to this day. No capture expansion since not by the government, by us, or any other party for that matter has been successful. Alright, soon after Mewtwo expect it was all over. Oh, तो इसने फिर सरेंडर कर लिया. Okay. Oak announced Kanto surrender to the Lance and Jodo, ending the war. Okay, भैया जी, we had done our best to destroy all evidence to project, but there was no identity team involvement in some kind of military research. Fuji was the first one in the towel. तो इसने इसको धोखा दिया इन सभी लोग को. The old coward openly pledged his allegiance to Lance substituting any terms they give him. Really यार Fuji तूने blame and Bill were more relocated. क्या करे अब? But they eventually followed suit. Now as to this Shigeki. अच्छा तो nobody knows. तो इसको किसी का पता ही नहीं है. The whole guy has been missing ever since the end of war. So and me. अच्छा तूने well Lance stripped me of my allied for position right quick. And Oak the bastard let me if मैंने गलती से वो कर दिया. If I hadn't invested my heart and soul, let alone my personal fortune, to defend a home not taken over by foreign aggressive. सच में यार. Well, जीवन के साथ बुरा हुआ. कहना पड़ेगा वो चीज़. I knew it wasn't right. I knew that the Kanto had been cheated of battle we could won. But I vowed then, and if Lance could not be taken down through legitimate means, I think वही बोला इसने, then I will cripple him from inside. I never looked back. So now you see Reko, why recent development have me very concerned indeed.
हाँ हाँ पता है मुझे. अरे डार्लिंग, I need you to leave for Wellington. We no time to waste. With this red dream running around, we can't leave the gym. Man, he will guard it. अच्छा तो ये वरीडन सिटी का जिम लीडर है अभी तो. इफ दैट व्हाट यू वांट जीवानी, बट ही वांट लाइक इट अवर बॉय. अच्छा तो ये लोगों की शादी हो गई है. मुझे तो लगा ये असिस्टेंट है, बट ओके जब पता नहीं था. मैसी विल कम विथ यू टू वरीडन इफ यू नीड टू बी. इट विल डू हिम गुड. वेरी वेल जीवानी, आई बी ऑन माई वे. ओके सच में सी. तो listen Rego, work must despise everyone who work on Me Too project. If all of a sudden he has business with Fuji after all these years, it can be good news. I can imagine he still believe he couldn't find some way to get at Me Too after all this year. But suppose he did, we have to know. That's where Reko, I want you to go to Palantown yourself, comfort work in his life and get to the bottom of what he up to. If that means restoring the force, then so be it. The old guy is banned from Pokemon battle, so he's not likely to put up much of fight anyway. And while you are here, do you see if you can gather any more information about this red kid or his family from locals, any key information, any weakness of his that we can exploit, will be great help. All clear, Echo? Very good. Just one more thing before you go. प्रमोशन हो चुकी है अपनी. वेरी नाइस बच्चे. एडमिन बन गए अपन आखिरकार, जो कि मुझे बनना था. ओके तो बहुत बढ़िया. एस इट वॉज टाइम यू अंडर माई ट्रस्ट रेको. अपन है ही कुछ ऐसे बंदे. विद दिस राइस इन ट्रैक आई थिंक यू हैव नॉट अबल स्टीलिंग पोकेमॉन फ्रॉम टीनेजर और वुमेन ट्रेनर्स. यू ऑल्सो बी ऑब्लिगेड टू कैरी वन ऑफ दिस. क्या रॉकेट पेजर. वेरी नाइस बच्चे. अपन ने तो the device will give whenever I want one or two or all of my admin to report back to headquarters whenever it goes off. I expect you to make your way here as soon as possible. Okay, that is all. You've shown a lot of promise, Reko. That's why I chosen to invest in you like this. Do not let it go waste. Is that understand? Yeah, I understand. Now off with you admin. No time to waste. All right, बच्चे लग. अपन को 11 ईयर्स पहले की जो स्टोरी पता चल गई है कि कैंटो जोडो की वॉर में कैंटो हारने की कगार पे था. तो इन लोग ने चाहा म्यूटू की पावर को निकालने के लिए, बट वो लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि म्यूटू एक काइंड हार्टेड बंदा था. तो इन लोग ने जेनेटिक क्लोन का प्लान किया, बट वो डिक्टो के रूप में फेल हो गया. इन लोग ने एक और जेनेटिक में एक फेलियर बना था जिसको कैस्ट्रोफो कहते ये लोग. और वो कैस्ट्रोफो के अंदर हेटरेट भरी पड़ी थी. वो पूरी तरह से एकदम बेकार था. और ये कौन आया 2 सेकंड में समझाने दो क्या हुआ था पहले. और तब इन लोग ने डीएनए का प्लान किया, ह्यूमन डीएनए की मदद से. तो तब इन लोग ने म्यूटू बना दिया, बट म्यूटू को कोई रीजन नहीं दिख रहा था कैंटो की तरफ से लड़ने के लिए. तो वो चला गया. अब एंड ऑफ टाइम वो अपने सरेंडर कर लिया. अपना जीवन जो कि एलाइट 4 था और रिचेस्ट मैन जो कैंटो का था उसका घर बार छीन लिया और एलाइट 4 भी नहीं रहा. अब फ्यूजी ब्लेन एंड बिल ने भी हार मान ली थी, बट जीवानी ने ऐसा नहीं सोचा और उसने टीम रॉकेट खड़ी की. हे रेको, यो क्या हुआ? डैम बॉय, व्हाट विद द न्यू गेटअप? से व्हाट? दे मेड लिटिल रेको एन एडमिन नाउ, डिड दे? वेल नो जॉक, सो नाउ यू कैन टॉक वुमेन एंड टीनेजर्स. सच में हाँ कांग्रेस. बट यू नो गिवन ऑल माई इनबोर्न गैंगस्टर स्किल स्पीक्स टू माई modesty that they didn't promote me to yet, doesn't it? Now and more juicy news. Oh, now you are going to Pallet Town to interrogate Professor. Dude, no way, that's too rad. You know they didn't give me a new mission yet. क्या हो रहा है यार? बाहर कुछ हो तो रहा है मेरा, और बाद में देख लेंगे. Why now it isn't a prime opportunity. I come with you Pallet Town and we beat up the old professor together. Oh man, fate is too kind sometimes, isn't it? Okay, well, Palantone that words can't, isn't it? So we either go to south from Mount Moore or through that risky Diglett cave off by Marmalade, and we won't right now. Let's get cracking. We had better be the good cop record, which I am bad as hell. Okay, तो अपन को जाना है.
पहले काम करें, 11 years की स्टोरी पता चल गई है। अब नेक्स्ट टाइम हमें पैलेट टाउन जाना है और प्रोफेसर ओक का भी पकड़ना है। क्या हुआ? Hi there, Reiko. It's been a while. Fill me in one of the latest rocket news if you would. Oh, now the little Austin kid knocked you all senseless. Haha, sorry. But I find that rather humorous. Some kid. What? Giovanni finally revealed his wartime secrets. Good, then we are fully on the same page now, aren't we? I suppose she told you about the catastrophe as well as then. Yes, that Mewtwo is well as sort of in the Saruran cave. But I'm curious, did he happen to know what became of Mew after the project was shut down? Now, very well. Keep up good work, Verko. You are a good friend to have. I talk to you later. अपना बिल भी अच्छा दोस्त है अभी तो। फिर क्या करें यार, सभी लोग को दोस्त बनाना सबसे बड़ी बात है। दोस्ती बनाओ, आगे बढ़ो। यार अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इतना सब बोलने के बाद ज़्यादा बोलने की इच्छा तो हो नहीं रही मेरी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।